Good morning, guys. Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. Today is the 7th of September. Today is the Nifty expiry, and today is a standalone Nifty expiry. Jahan pe we don't have Bank Nifty, which is expiring today. So today is the day where today is the first day where only Nifty expiry is going on, and because of which we are going to see a lot of volumes coming into the Nifty options. And yeah, the premiums have been absolutely dead, probably historically, even when you compare 2017 2018 markets, उससे भी कम premiums पे ट्रेड हो रहा है, especially like weekly options. There is absolutely nothing in the weekly options. तो ऑप्शन सेलिंग करने वालों को काफी ज्यादा डेल्टा कॉस्ट लगने वाला है. If you look at this, the straddle opened at 60 points and we went all the way from 610 to 550, exactly 60 points down move आ गया, and again 50 point up move already आ चुका है within first 1 hour. And straddle का premium जितना almost move हो चुका है, but I had a bit of a directional scalp यहाँ पे. If you look at this was a breakout level, right? This was a breakout level. यहाँ से ही breakout आया था, and यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे I went long, थोड़ा मतलब इसके ऊपर गया था, ऊपर से ही लिया था मैंने. And once the puts gave up a decent amount of money, I converted it into a 19600 straddle. अभी 19600 short straddle पे बैठा हूँ मैं, and the combined premium is around $47, which is okay because जब तक market ये breach नहीं होता है, मेरे को कहाँ तक ये मिलता है, I get the just a minute. I get the break even points as 19650 and 19550. तो उसके अंदर में कुछ adjustment कर लूंगा. तो currently the mark to market is around 16-17,000 rupees. अभी मैंने एक छोटा सा quantity मैंने निकाल दिया. If you can see this 19600 straddle में निकाल दिया छोटा quantity. And now I will be holding on to this and I'll be managing this from a delta neutral perspective because देखो, I'll take a short trade only if I come to this level. If the markets come to this level, I'll take a short trade, or I'll take a long trade at this level now. At this level क्यों? Because अगर market यहाँ तक आएगा ना, then there will be some amount of traps for the buyers. तो सॉरी, there will be some amount of traps for the sellers. तो यहाँ पे जो सेल करते हैं उनको ट्रैप करना पड़ता है, तो probably यहाँ पे नीचे आके then it might start heading back up. तो दैट्स वाई यहाँ पे मेरा लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा, मेरा शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा, उसके बीच में मैं थोड़ा बहुत नॉन डायरेक्शनल पोजीशन को ही हैंडल करते. ऑलराइट गाइस, देयर वाज अ वियर्ड प्रीमियम बिहेवियर एंड जब मार्केट यहाँ से बॉटम यहाँ पे आ गया तो देन आई एडेड माय साइज thinking that the markets would stay within this range, but look at the option prices. मार्केट इज जस्ट अराउंड द डेज हाई. देखो, मार्केट डेज हाई के आसपास ही है, तो टेक्निकली स्पीकिंग 2 घंटे के बाद मार्केट अगर डेज हाई के पास आया है तो कॉल शुड बी ट्रेडिंग वेल बिलो देयर डेज हाई. बट यहाँ पे देखो, द कॉल्स आर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट डबल डबल से भी ज्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है. लुक एट दिस. इस पॉइंट पे 42 रुपीज पे थे एंड द मार्केट इज एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, बट द कॉल्स आर एट 64 रुपीज. So this was clearly a very weird price action behavior and काफी strong biases generate हो रहा है market के अंदर, because of which the option premiums are kind of governing how the spot moves, and because of which like I was in a good decent 30,000 mark to market at this point, and यहाँ पे size add कर लिया, and after that there was a huge call side burst. एंड मैंने यहाँ पे इस पॉइंट तक वेट करने का गलती किया, एंड जैसे इस पॉइंट गलती ये हो गया कि इस कैंडल में ना ऑल हेल ब्रोक लूज. तो उस पॉइंट पे सडनली देयर वाज अ ह्यूज spike in the call side premiums, especially these 19650 calls. They were trading at 3 rupees and they went up till 30 rupees. 3 से 30 पहुंच गया. My mark to market is kind of dipping down, so I will be managing my mark to market. देखेंगे. All right guys, a big loss today. I had to take a huge hit यहाँ पे, जहाँ पे जब मार्केट ने इस कैंडल में जब मार्केट जस्ट लाइक रैलीड, एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एडिशनल प्लेयर्स इन निफ्टी एक्सपायरी टुडे, बिकॉज बैंक निफ्टी भी जो भी एक्सपायरी खेलते हैं वो सारे लोग निफ्टी में आ गए, एंड बिकॉज ऑफ विच द शॉर्ट कवरिंग वाज इनसेन. तो फॉर एग्जांपल टू गिव यू पर्सपेक्टिव, दिस 19750 का कॉल ऑप्शन, 19750 का कॉल ऑप्शन, look at this, 19750 का call option, it after 230 it went from 1 rupee
to 35 36 rupees and it ended zero. So zero था भी इस point पे sluggish हो गया and I could not exit the trades which I was supposed to exit at my prices, and it was all hell broke loose, and I accept today was a very shoddy performance by my side, and yeah, not happy with how I managed the positions, not happy with how I traded, not happy with pretty much everything that went, because once in a while, like the मेरा last जो ऐसा big loss जो आया था, let me see when was this big loss, previous big loss जो था मेरा, I think it was in the month of, yeah, जुलाई में था, जुलाई में it was 1.9 लाख रुपीस लॉस, एंड उसके पहले वाला जो लॉस था अप्रैल में था अराउंड 2 लाख का लॉस. तो आई हैव सीन दैट उसके पहले यहाँ पे 1.5 lakhs का लॉस. तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो 3 महीने में एक बार आता है, देखो दिसंबर के बाद अप्रैल के बाद जुलाई के बाद अभी सितंबर. तो these losses once in a while, it just some things are out of your control, and yeah, but today I'm not particularly satisfied with how I managed my position. Nothing much to say, because ऐसे 230 के बाद if something happens like this, 1 rupee का option अगर 40 rupees पहुंचता है 230 के बाद, there is nothing much that anyone could do unless somebody exited their positions, stop loss काट के अगर exit करते तो कुछ होता है. बट अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते सिस्टम पे, देन दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड या, कांट हेल्प इट. One of those days where you have to gracefully accept the loss and say that, okay boss, I'll come next day, probably I'll come better, stronger, and probably with reinforced risk management back into your brain. So that's what we are supposed to do. There is nothing much anyone can do at this point. Whenever you had a bad day, usually kya hai, whenever I have had decent days, I try to pick each and every mistake of mine, but whenever I've had a bad day, I don't try to go super hard on myself, because that will completely kill the confidence. So all I can say is, yes, I faltered, today was not my day, and I'll accept this loss, I'll accept my mistake and learn the lessons and move on. So, आप बताओ, how was your expiry? And till then, take care.